This is anchor Shivani Gupta, and you're watching me on Super News 24. And here with me, I have the celebrity makeup artist Ojis Rajni with me. And I just want to know, ma'am, how are you feeling today? In I'm this, loving it in Kolkata, and I right. think it's always nice to say I'm feeling good because I think when you manifest good things, only good things happen. You say, "Hi, मैं थकी हूँ, ये है, वो है." You're only creating problems for yourself. So always say, "I'm lovely, everything is going great, everything is fantastic in life," and have gratitude. और उस जमाने में क्या था कि मेकअप एसोसिएशन में रूल था कि बॉयज मेकअप कर सकते और लेडीज हेयर कर सकती है. तो सिंह आप हेयर क्यों करिए, आप मुझे क्यों नहीं? She always had that complex. So I told her on her face because आपकी इंडस्ट्री हेयर ड्रेसर्स वालों को ब्लो ड्राई करना नहीं आता, इसलिए I think I do a wave. So Malika said, "Excuse me. If you think you know your job so well, why don't you do it?" I said, "ठीक है, मुंह धोले में कर रही हूँ." And she washed her face Right. and made me do her hair and makeup. Cut to 2:30 she packs up a makeup artist and hairdresser saying Tata bye bye, and I did the ads, styling, hair, and makeup for the next 3 days. Wow. You have to love your work. Even at this age, I love my job. I love traveling. I never get tired because I'm always in that lovely good mood when I'm working. When I'm not working, I'm a little off. Because you're the trendsetter. So let's Like hope I for the said, best. trends come and go, but always keep your foundation very creamy. ठीक है, summer में हम कभी कभी थोड़ा setting powder लगाते because we feel कि पसीना आएगा, but in winters everything is very creamy, very dewy. So it's the time to bring out your cream highlighters, your cream blushers, creamy dewy foundations you can use. And whether it's winter or summer, if you see my style of work is always creamy, right? आज आपकी मम्मी खाना बनाती है और आप ताजमहल या वेस्टर्न में खाना खाओ, लेकिन अगर आपकी मम्मी के हाथ में वो जो हुनर है तो ताजमहल पानी कम चाय है खाने के सामने, राइट? तो वैसे आपके अंदर हुनर है कि अगर आपके हाथ में वो जादू है, आपके माँ बाप का, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, तो आप कमाल कर ही सकते हो, राइट? And this is so nice. You're giving us such a good vibes. So I just want to know, you're into this industry from last 28 years. So what do you like more into celebrities, or you like weddings more? I'm just curious to know, and I think our viewers are also very curious to know about this. Sure. I think both, a mix of both Bollywood and weddings, because I think today we're known in weddings because of Bollywood. People know me as Aishwarya as makeup artist, Katrina's makeup. So I think a balance of both. But in the wedding season, I prefer only doing weddings because you need your concentration for the dates because everybody's dates are so haywire. And if you're doing Bollywood, dates keep on changing like the weather. So I think during the wedding season, only weddings, and otherwise off season is only Bollywood. That's so nice. So enjoy both, right? You're in City of Joy, Kolkata, and I would really like to know. And Calcutta के काफी सारे लोगों को जाना है. When is the next masterclass coming up for all the Kolkata people? So I think there's a big surprise that me and my darling Nahid are coming up with a big super rocking masterclass really very soon as this crazy bridal season gets over. So I think Right. March is when you can expect a class, yeah? All right. So March, guys, you need to just remember this date. Because we need Madam. 2 months to prepare to make it go Right. viral. So I think that'll be the time. Right. Because last time when you were here, I think it was a bombastic Yeah, touch wood, it event. was the event. Right. Ojis ma'am, we have seen you in movies. Like I am sure यहाँ पे जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, they all want to know when are you coming up with the next movie? I already have a documentary going on Netflix and Amazon called Right. Beyond Bollywood, which you should see. It's really nice. It's a journey of me as a makeup artist and of a choreographer, Ganesh Ji. Right. And we have a Bombay we have a makeup association, so the person who's behind the association, how we came up with the association, and his tragic is very sad that he built a whole empire and his son and daughter came and they've taken away everything and he's back to from rags to riches, but is it ulta, it's from riches to rags. Oh. So, and it's a real story of him they've Okay. shown, so which is really sad, but it's a very nice, realistic film. Right. And also, if you've seen the movie of Madhur Bhandarkar called Fashion, you'll see me in that also because I've done makeup and hair for Priyanka Chopra and Mugdha Godse. So Madhur has a very good feeling that whoever the star cast is, Madhur always like to incept us in one of the roles. And in the title credits also he says thanks to Ojis Rajani, which is really very sweet with our video saying thank you. Right. But more or less, I'm more of a makeup artist. I'm more of behind the scenes than this. But definitely, I'm coming up with my own chat show very soon. I think the promos, if you see on my archives of my story, we just shot for a chat show where the introduction is already out. And coincidentally, that lady is from Kolkata. And I'm supposed to call her tomorrow morning. So she's a very big finance lady. She's from the finance background. Her show is all about finance. But we thought of doing it, making a little more quirky, a little more fun chat show. So again, we've just finished the promo shoot and we're starting to shoot again from Jan. So that's going to be a kick-ass thing. And she comes regularly to Bombay from Kolkata. And I think she's very respected and highly appreciated in Kolkata. So it's really nice.
So we'll be seeing you very, very soon on the big Yes, screens again, right? definitely. So, okay, ma'am, when you were here, I would really like to know about your journey, right? You were a chartered accountant, and how did you got into this industry, which is like most cluttered market, I would say, and how did you push yourself to be the best one in the industry? So touch it again, thanks to my parents, a lot of gratitude to them. I was a shock because I was academically a very good student in college, in modeling. I used to model as a, boy at that time. If you see my picture, you get a heart attack. So I used to be the favorite milk food yogurt ice cream model, and lots of ads I've done. So from the time I kind of started going to college, I never took a rupee from my dad. And that time it was very, I mean, very proud to say that time my first ad got me 45,000 rupees, which is a lot of money. And I bought my first house with my hard-earned money at the age of 26. Wow. Obviously that time being so flamboyant and being so overtly, loud the way I am or the way I was, it Right. wasn't very socially accepted by my parents for my pillars of strength. And I told them that I working as a CA for you, but I'm not happy. And I worked for this as a CA for 1 year, but professionally was not growing, I was not feeling happy. There was no satisfaction, no jobs at all. And I came home Monday and I said, Papa, I'm not going to work at all from tomorrow. You kill me, do what you want. I'm not going, period. And my mom's Right. sister lives in Miami. And she called her up and said that no, Ojas doesn't want to work this year. So she said, why don't you bring Ojas to Miami and maybe we can figure out what to do. Right. So I went to Miami and I started working in Beauty Schools of America. It's called the Fashion House of Miami, Right. and I enrolled there just randomly, imagine. And I loved it so much that I used to be so attentive. I was the best in my class, Right. to cut to where I got to do the Bold and the Beautiful series on Star World, and I did the Baywatch series with Pamela Anderson and Brandy Rodriguez. All right. Cut to my relation was so friendly with Brandy Rodriguez that when she came to India, if you know, she did Ritesh Deshmukh's debut movie Out of Control, which Right. Mr. Vashu Uh-huh. Bagnani had produced. So I got a chance to do her makeup and hair in that. So that also created a lot of waves. And actually, I had come just after 7 years to India for a holiday of 20 days, imagine. Right. And we all love to show up because of Zamani. We want to say, oh my God, I've come from America, yeah, all that stuff. So I kind of, went to meet all my photographers. I used to be models. Everybody in the Right. industry knew of me. So I went and just showed up, oh, I've come from America. And they go, ye kiya, wo kiya. So my friend Suresh Natarajan and he's saying, oh, just why do you want to go back? Why don't you try for a film here? I said, are you crazy? He's saying, Urmila is looking for a makeup artist for a film. Why do you want to meet her? And I remember I went to her house in Andheri and she's a duple. Suddenly she comes looking like one sweetheart and she looks so pretty even without makeup. I'm like, wow, hi. And she's saying, oh, hi. And, I took this whole makeup bag, my hair extension bag, my wig bag, everything, because I was the only person that time in the whole of India who did hair and makeup and costume styling. Right. So we were just chit chatting, and I said, this is what I'll have in mind and all that stuff. So I said, do you want a trial? She's like, are you crazy? Looking at you, I don't think I need a trial. So that was such a good thing. So today, aaj ke zamane mein, jab actresses ya brides ask me for a trial, I tell them, are you foolish? When I was a nobody, actresses like Aishwarya or Urmila never asked me for a trial. So I don't think I need to do a trial at this stage of my Right. career. And I think that was the biggest blessing. And I remember when we saw Urmila on the big screen, when you see your first work of vision with the hair and the makeup, and she was totally a sultry sex goddess, if you've seen. Yeah. So that created worldwide storms. And cut to, I was shooting for a very funny, mediocre Nirma washing powder ad in Switzerland. And that time, the production company gets a call saying that Ojas is shooting with you all in Switzerland, but we're looking for her for even to do makeup for Aishwarya's Coca-Cola ad, which Mr. Ram Majwani was producing. So they said, are you okay to do it? I said, yeah, but I've never worked with her. She's okay. They said, no, no, she's heard very good reviews from Mr. Majwan because I've worked a lot with Ram Majwan as a director. And even Manish Malhotra in the clothes, even he said, Ojas is fantastic. I'm like, okay. So imagine I land in Bombay at 2 a.m. and at 7 a.m. I'm on the set. And I meet her and I think it was struck Cupid. It was so good that a rapport kind of hit off so well. And Right. even she's a perfectionist like me, and she likes somebody doing hair because a lot of times what happens if somebody else is doing hair, अगर आप उसको बोलते हो तो थोड़ा ego issue होता है. Correct. और उस जमाने में इतनी hairdressers talented नहीं थी to do the western kind of blow dry, the bouncy look, Right. or kind of relatively being a little more innovative or more stylish with hair. And that's where my USP came in because I think that time there were two brackets of makeup artists. One was the gay makeup artist, and one was the straight Maharashtrian makeup artists. The Right. Maharashtrian makeup artists were very Sida and they only knew their work like a donkey, only this much. They were not creative. They would never go out of their comfort zone to try to create looks or to understand. हम लोग उस जमाने भी रद्दी वाले के पास में Vogue magazine और सब वहाँ मिलती थी, Right. abroad की magazine. That time India didn't have any of these fashion magazines. Uh-huh. I'm talking about 27 years ago. I started my career.
And touch wood, I think we used to take so much of interest in the color and the styling. I had learned in LA how to make hair extensions, Right. clip wale. So I used to tell them extension bhi pyare lagenge. And that's what they love about me, that I used to go one step ahead to create a look. Right. Because when the director or cameraman used to ask us that, what do you have in mind? And I've always been a Destiny's child because my mom's a Brahma Kumari. And she's always told us from that time, आजकल लोग बात करते manifestation करो, ये होगा, वो होगा. But मम्मी उस जमाने से बोलती थी कि हम लोग दो हाथ वाला कौन होता है? इंसान होता है. तो मम्मी हमेशा बोलती कि दो हाथ वाले इंसान से क्या मांग के करोगे? जो 1000 हाथ वाला है ऊपर वाला, उससे मांगो और आप देखो आपका करियर कहाँ से कहाँ पहुंचेगा. Which is so true. Like I said, see, it was Destiny's Child कि मुझे मेरे लैप में उर्मिला का फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला. I got Aishwarya's first co-cat to all her big blockbuster movies. And I always watched as a child that time MTV Grind जो मलाइका अरोरा का आता था हर संडे, वो स्विमिंग पूल में बॉल के साथ खेल रही है और डांस हो रहा है, सब वेस्टर्न म्यूजिक बज रहा था. I was always say कि मैंने उर्मिला का किया, ऐश्वर्या का किया, but why have I not done Malaika? And then my phone rings again by another director. Again, I'd love to take his name. Mr. Sanjeev Sharma from Optimistic Films and Pala Communications. And he used to do all his ad work only with me. And he's saying, oh, just there's a good news and a bad news. I said, पहले bad news बता, good news पहले मत बता, मेरा मूड खराब हो जाएगा. So saying bad news ये है कि हमारे पास मलाइका की ad आई है दम पान मसाला की, but the condition is that she'll get her own makeup artist and hairstylist. आपको सिर्फ उसकी costume style करना है और उसकी shoes और accessory करना है. So I said, okay, ठीक है, चलो देखा जाएगा. I go to meet Malaika on the sets of MTV Love Lines, and there her makeup artists there, hairdressers there, and they're doing a very okay job. So even I have like all my stylish, So I go take her fittings and got trial, liya dress बनाया, and then again the next day take a trial, and she's like, "Oh, this is your super, very nice job." I said, "Thank you." कभी भी मुंह से खोल नहीं गई थी मुझे मेकअप तुम्हारे पास ट्राई करना, तो मेरा भी ईगो था. I said, ठीक है, हम भी नहीं बोलते हैं, तू खूबसूरत है, मैं भी कम नहीं. It's like that. So तीसरे दिन हम पहुंचते सेट पे. It was a 3-day shoot in Kolaba Mukesh Mills for Dum Pan Masala. And makeup ho gaya, hair ho gaya. And the cameraman was Mr. Anil Mehta, who's one of the most renowned and appreciated cameramans of our country. तो 11 बजे वो बोल रहे कोचे इसका कोई दम नहीं लग रहा उसके लुक में, किससे मेकअप किया? सर उसकी टीम बोलो, आप आपको हिम्मत है तो मुंह पे जाके. So then again we go back at 12 to the makeup room and I'm telling the makeup artist कि थोड़ा सा यहाँ socket line दो ये वो, because मुझे बचपन से like I said I used to do makeup, I used to watch makeup, watching Helen, watching Mumtaz. I see makeup is something either you love it or you don't love it, either you have that in you or you don't have it in you. Right. And she kept on looking at me with dirty looks. फिर बच्ची थी उसकी हेयर ड्रेसर जिसको इतना एटीट्यूड था कि पूछो मत. और उस जमाने में क्या था कि मेकअप एसोसिएशन में रूल था कि बॉयज मेकअप कर सकते और लेडीज हेयर कर सकती है. तो सिंह आप हेयर क्यों करिए, आप मुझे क्यों? शी ऑलवेज हैड दैट कॉम्प्लेक्स. तो आई टोल्ड ऑन अ फेस बिकॉज़ आपकी इंडस्ट्री हेयर ड्रेसर्स वालों को ब्लो ड्राई करना नहीं आता है. आई थिंक आई डू अ वेव. सो मलाइका सेड एक्सक्यूज मी, if you think you know your job so well, why don't you do it? I said, ठीक है, मुंह धोले में कर रही हूँ. And she washed her face and made me do a hair and makeup. Cut to 2:30 baje, she packs up a makeup artist and hairdresser saying tata bye bye, and I did the ads, styling, hair and makeup for the next 3 days. Wow. तो इसको बोलते डेस्टिनी और माँ बाप का आशीर्वाद प्लस आपका कॉन्फिडेंस प्लस आपका हार्ड वर्क एंड आपका डिटर्मिनेशन. लाइक सर हम लोग हमेशा नेगेटिव बहुत होते हैं जिंदगी में, राइट? फ्लाइट डिले हो जाएगी तो फ्लाइट मिस हो जाएगी, तो एक्चुअली फ्लाइट नहीं मिस होने वाली तो भी आपकी फ्लाइट मिस होगी. लाइक आई रिमेंबर स्कूल और इन कॉलेज, आई रिमेंबर आई टॉप माय कॉल फ्रॉम सिडनम विद यश बिरला, एंड मेरे फ्रेंड्स ने मेरे साथ बहुत बड़ा प्रैंक खेला था. व्हेन आई गो देयर तो नोटिस बोर्ड में कहीं भी मेरा नाम दिख नहीं रहा था. तो मुझे बोले नहीं तू फेल हो गई, तू फेल हो गया. लाइक आर यू मैड? आई थिंक I will go and catch the neck of the person who taken mine, because I'm sure in my ICW paper I must have got 95, because I was bang on with my work. So then I said, relax. Om Shanti. We say Om Shanti. And then again I look right on the top of the mode and there it says Ojas Rajani stopped. So I said, देखो मेरा नाम है वहां पर. If I would have thought negative, तो वो negative आपको draw कर देता है नीचे. So always in life I've realized कोई भी कंडीशन आए, आपने टाइटैनिक मूवी भी देखी तो वो हीरो क्या बताते हैं हीरोइन को कि नो, बी पॉजिटिव, you will not drown, you will not drown, and she survives. Right. So it's all about survival. And the biggest bet is that I'm still survived with my mom's, dad blessing me from heaven. That even after 27 years, I'm still working. I'm still getting my due credit. I'm still getting my brides, my actors, my events. So I feel if you're determined, if you're hardworking, if you're focused, because आजकल क्या लोग काफी focus हिला देते हैं. So I feel if you love your work, no matter, I know all my actors, if you see reviews on Instagram also, or if you Google also, Aishwarya said that रात को आधी नींद में भी Ojas is doing a makeup, she'll do a good job. Right. So I think that's the power of makeup, that once you give your 100% to it, people are always ready to love you and work with. तो आपके बारे में इतना कुछ हमने इतना डीपली जाना है. आई वुड रियली लाइक टू नो फ्रॉम यू व्हिच इज योर फेवरेट एक्टर टू वर्क विद अभी टिल डेट.
आई थिंक हमेशा हमारी हर एक फेवरेट एक्ट्रेस रहेगी, बट मेरे दिल के करीब हमेशा उर्मिला एंड ऐश्वर्या बी वेरी क्लोज, बिकॉज लाइक आई सेड कि वो लोग ने, जब हम नए थे, जब हमने जो शुरुआत की थी, एंड यू नो आई गॉट सच अ बिग प्लेटफॉर्म टू वर्क विद, एंड टू ऑल द डायरेक्टर्स एंड ऑल द टेक्नीशियंस, माय असिस्टेंट सो फार, माय ड्राइवर, बिकॉज यू नो मूवीज में लोगों को लगता है, आप बड़े पर्दे में देखते हो, आपको लगता है हाँ, बहुत ग्लैमरस है, लेकिन मेरी काफी असिस्टेंट आई है जो 2 दिन में ही शूट छोड़ के भाग जाते, बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बिकॉज मेकअप आर्टिस्ट को पहले बुलाया जाता है। तो बिल्कुल। अगर 9 बजे की शिफ्ट 7 बजे में आप पहुंच जाते हो, और अगर पैकअप 9 बजे रात को भी हो, फिर भी आपको वापस पहुंचना। अभी हम लोग ने, आई रन एन अकेडमी इन बॉम्बे, तो अभी मेरे लास्ट बैच में हम लोग ने यूलिया वतूर जो है एक्ट्रेस, उसका आइटम सॉन्ग किया, और मेरी 3-4 स्टूडेंट बहुत, ओ वाह मैम, हम लोग आ रहे, आधा दिन हो मैम, हम लोग घर जा रहे से, क्यों चटनी गीली हो गई, यू नो लाइक हाउ फनी इज दैट कि भाई आप इतनी जल्दी थक गए हो। एंड आई एम 56 इयर्स ऑफ एज डार्लिंग, जस्ट टू लेट यू नो। तो अगर 56 इयर्स में भी अगर मेरे में इतना जोश है, इतना ताकत है, इतना एक्साइटमेंट, इतना एंथुजियाज्म है, तो आई थिंक द यंगस्टर शुड रियली टेक यू नो हाइक एंड अंडरस्टैंड दैट you have to love your work. Even at this age, I love my job, I love traveling, I never get tired because I'm always in that lovely good mood when I'm working. When I'm not working, I'm a little off. तो आई फील दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि अगर आप इमेजिन, आप लोग 25 साल की लड़कियां जो आ रही हो सीखने के लिए, आपकी हवा ठंडी हो जाती दोपहर तक, विच इज स्टूपिडिटी, राइट? बिकॉज दैट शोज दैट यू आर नॉट सो पैशनेट, यू स्टिल नॉट लविंग योर जॉब सो मच। एंड इनफैक्ट गाने में तो और भी मजा, बिकॉज म्यूजिक, देयर सो मेनी पीपल, प्लस आप यू नो घड़ी घड़ी मॉनिटर पे चेक करते हो, कोई भी बाल ठीक है, मेकअप ठीक है, टच अप्स हो रहे, एंड व्हेन इज अ बिग यूनिट, यू ऑलवेज स्टार्ट लविंग ईच अदर, it becomes like a very happy family, you know, Like a and that's how your family, work right? grows, because सब लोग की नजर आप पे होती है, आपको लगता है कोई नहीं देख रहा है, आप मिसबिहेव करो तो भी देख रहा है, आपका कॉन्डक्ट अच्छा है तो भी लोग देख रहे हैं। बिल्कुल। तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक मूवी प्रोजेक्ट में प्रोडक्शन वाले हैं, कैमरा क्रू है, स्टाइलिंग क्रू है, हेयर डिपार्टमेंट है, मेकअप डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सबकी नजर आप पे होती है, बिकॉज इफ दे फील योर गुड, वर्क ऑटोमेटिकली रिपीट्स, बिकॉज राइट। प्रोडक्शन वाले भी सॉरी काफी टाइम बोलते कि नहीं नहीं प्लीज टेक ओवर, तो दैट्स हाउ वर्क विल हैपन। तो हमें कभी हार नहीं मानी है, एंड हमें हमेशा वी हैव टू गिव 100%, इवन सपोजिंग कभी कोई बजट भी कम हो, तो आजकल के एटीट्यूड लोगों को बजट कम है, मुझे इसमें नहीं है, एंड देन यू नो दे मेक देयर वर्क सफर। इनफैक्ट आप इतना अच्छा काम करके नेक्स्ट फिल्म में आपको बजट के ऊपर बुलाएंगे, अरे वाह इसने इतना अच्छा काम किया, बुलाओ इनको। Being from the makeup industry, I would like to know what is that one tip जो कि आप सारे makeup artists को देना चाहते हो, which you think that it is missing from the industry, this should be there, जो कि आपके टाइम पे अभी तक जो चला आ रहा है, which has made you stand here. तो ऐसी एक चीज, एक टिप जो आप देना चाहोगे? आई थिंक स्टिक टू योर स्टाइल स्टेटमेंट ऑलवेज। एक इंग्लिश में और हिंदी में कहावत है, लेस इज मोर। अगर आप अपनी स्टाइल स्टेटमेंट में टिके रहोगे, जैसे इफ यू सी उर्मिला's फर्स्ट डेब्यू मूवी, whether it's रंगीला, whether it's प्यार तूने क्या किया, whether if you see ऐश्वर्या in the coca to देवदास, to हम देखते हैं to जोधा अकबर, to रंगीला, sorry, to गुजारिश, to robot, you know, Right. I have maintained my thin base style, सॉफ्ट मेकअप, ग्लैमरस भी। अगर आप रोबोट में देखो तो ऐश्वर्या जितनी ग्लैमरस लगी वैसी कोई पिक्चर में नहीं लगी है। बिल्कुल, right. So I think even keeping the glamour state in mind, I've always made the makeup look like real. तो आपका फाउंडेशन जो है वो आपका यूएसपी है। इफ योर फाउंडेशन शेयर पतला, आपका स्टाइल में सॉफ्ट एंड ग्लैमरस है, तो वो बरकरार रहता है। एक्चुअली अगर आप देखो तो रंगीला में जो हेयर और मेकअप है, वो अभी भी आप तारा सुतारे को देखो, दीपिका को देखो, दे कॉपिंग द सेम लुक। Same, फैशन right. आती जाती, लेकिन लुक्स वही रहते हैं। आप कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, वही है। नथिंग इज चेंजिंग। फैशन इज इवॉल्विंग, मेकअप इज इवॉल्विंग, प्रोडक्ट्स इवॉल्विंग। लेकिन कमाल की चीज ये है, काफी टाइम हमें ब्राइड भी पूछती है, वी वांट टू नो व्हाट प्रोडक्ट्स यू यूज। ऐसे डायरेक्ट तू मुझे रास्ते का फुटपाथ का डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी देगी तो भी हम तुम्हें हीरोइन बना देंगे, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द प्रोडक्ट। आई स्टिल चैलेंज एवरी ब्रांड, इट्स नॉट अबाउट द प्रोडक्ट, इट्स द टेक्निक, द हैंड ऑफ द आर्टिस्ट। Right. राइट? आज आपकी मम्मी खाना बनाती है और आप ताजमहल या वेस्टर्न में खाना खाओ, लेकिन अगर आपकी मम्मी के हाथ में वो जो हुनर है, तो ताजमहल पानी कम चाय है खाने के सामने, राइट? तो वैसे आपके अंदर हुनर है कि अगर आपके हाथ में वो जादू है, आपके माँ बाप का, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, तो आप कमाल कर ही सकते हो, राइट? I mean, there are so many interviews where Malaka Shah is saying that, you know, we trust Ojas blindly, this, that. There's an article, if you see on Mumbai Mirror, where they, विपुल शाह करके एक्शन रिप्ले पिक्चर के जो प्रोड्यूसर थे, उनको बहुत फट रही थी हमें पैसा, because I do charge a premium because I'm doing hair and makeup so many years. So he was trying to push another makeup artist, and Aishwarya said, no, I want only Ojas. So he made headline, तो मेरी publicity हो गई positive, it came on the headline that Aishwarya rejects another makeup artist and insists on her makeup artist Ojas. तो ऐसे मेरा तो फायदा ही हो गया। आपने उस जमाने में तो इंस्टाग्राम नहीं था, तो चलो पेपर में आ गया। Right. तो आई फील अगर आप अपनी स्टाइल के ऊपर टिके रहते हो, बीट ब्राइड्स, बीट बॉलीवुड, लाइक आई गॉट माय फर्स्ट एनआरआई ब्राइड, अ बिग लग्जरी वेडिंग जो आजकल बोलते हैं ना $1 billion, आई गॉट माय फर्स्ट ब्राइड इन लंदन
एंड देयर आर 3 डॉटर्स। उनकी वो डॉटर का मैंने मेकअप देवदास के टाइम का, बिकॉज़ जब देवदास रिलीज़ हुई थी, तो उन्हें वही डिज़ाइनर को बुक किया और मुझे बुक किया, बिकॉज़ दे वांट टू रिक्रिएट द होल Devdas set only. Everything was Devdas, if you see, right अच्छा, from the decor to the location, but it was created in London in a very ओके, big way. और उनकी दूसरी दोनों बेटियों की शादी भी 10 साल में हुई. They only called me. Because क्या होता है कि आपका एक फैमिली बॉन्ड हो जाता है. बच्चा आज बिल्कुल, today also I've come to Kolkata for a bride. I've done her cousins 4 years back. I've done her that cousin का 20 years back, Mrs. Podar, if you know Podar school वाले यहाँ पे रहते यस, हैं, यस, तो यस, मानसी Podar wedding I've done 18 years back, imagine. But still God is sending work. और लाख हम सोशल मीडिया में प्रचार करें, लाख चापलूसी करें, इसकी पूछ पकाए, उसकी पूछ पकाए, बट आई फील काम देने वाला ऊपर वाला भी है, एंड प्लस अपना काम जो इज वर्ड ऑफ माउथ, करेक्ट, राइट? आज इतनी हीरोइन, लाइक आई रिमेम्बर मेरी मम्मी को काफी मेरे फ्रेंड बोलते नहीं, शी शुड स्टार्ट सोशलाइजिंग, बॉम्बे टाइम पार्टी, ये जाओ। ऐसे अगर पार्टी में जाने से काम होता, जैकलीन फर्नांडिस आज टॉप की हीरोइन हो गई होती, वो तो हर एक पार्टी में दिखती है। करेक्ट, वेरी ट्रू, या मेकअप आज ठीक है, नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है, बट खाली नेटवर्किंग से काम नहीं मिलता है, आई फील। बिल्कुल, इनफैक्ट आई रादर पिक अप द फोन इन द डे टाइम, जब आप होश में भी, रात में पार्टी में तो आप आधे तो अय्याशी में हो, और दूसरे दिन भूल जाएगा, आपको मेरे जैसी 100 चमक चलो मिली होगी, तो आपको कौन याद रहने वाला है? बिल्कुल, बट आई रादर पिक अप द फोन इन द मॉर्निंग एंड से डार्लिंग हाय, आई एम सो एंड सो, आई एम इंटरेस्टेड कमिंग एंड हैविंग अ मीटिंग। दैट्स हाउ यू नेटवर्क, नॉट जस्ट बाय पार्टिंग एंड हु एंड हाउ, उससे काम नहीं करेक्ट. मिलता है। So, to all the makeup artists, do remember these tips because this is coming from the best than the rest. So, because winter season is here and the wedding season is here, of course, and we have the best makeup artist in our town, Kolkata में है, तो मैं ये question कैसे हमारी प्यारी brides के लिए नहीं पूछूं? So, I just want to know from you, ma'am, कि one tip which you want to give to all the brides, what they actually need to do. अभी trend क्या है? मतलब because you're the trendsetter. So let's know Like I from the said, best. trends come and go, but always keep your foundation very creamy. ठीक है, समर में हम कभी कभी थोड़ा सेटिंग पाउडर लगाते, बिकॉज वी फील के पसीना आएगा, बट in winters everything is very creamy, very dewy, so it's the time to bring out your cream highlighters, your cream blushers, creamy dewy foundations you can use. And whether it's winter or summer, if you see myself work is always creamy. बट खाली इतना होता है कि आप स्किन के हिसाब से करते हो मेकअप, तो अगर किसी को ओपन पोज है, एक्ने है, तो उसके ऊपर थोड़ा आप क्रीम ब्लशर कम लगाएंगे, पाउडर ब्लशर लगाएंगे, लेकिन फिर हम उसके ऊपर फिक्सर मारते हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि इतने जमाने से, अगर आप देखो, पहले लोग पैन स्टिक मेकअप जो वाटर स्प्रे मारते उसको कम करने का, आजकल इतना मेकअप लगाने फिर वो लोग फिक्सर मारते। पर इससे अच्छा आप अपना बेस ही पतला रखो, कीप इट सो फ्लॉलेस, सो मिनिमल, बट स्टिल ब्यूटीफुल। द बिगेस्ट एग्जाम्पल, जो कम मेकअप लगाता है वो जवान लगता है। बिगेस्ट एग्जाम्पल, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू माय डार्लिंग शिल्पा शेट्टी, बिकॉज अगर आप उसका बाजीगर या दूसरे पिक्चर देखो, चुरा के दिल मेरा, शी इज वेयर सच लेयर्स। धड़कन में भी आई रिमेंबर आई वाज देयर, शी वाज वेयरिंग सच अ थिक लेयर, but when I worked with her, I told her that please, do your hair like this, do your, lips like that, or do your base like that. And today if you see, लग ही नहीं रहा कि शिल्पा शेट्टी ने फाउंडेशन लगाया मुंह पे। She's got her look so bang on after all the year. Yesterday's actress, अगर आप रवीना टन को भी देखो, वो भी फिर भी अभी भी पुराने जमाने की लगती, हाँ, लेकिन शिल्पा शेट्टी the biggest living example that she's killed the market with her whole aura, her whole style statement, her makeup, her hair. It looks so versatile, and I think it's bang on. So I feel indeed. flawless but minimal, and it should look real, and definitely make it more creamy, more dewy according to your skin type and requirement. Because if you have an oily nose और आप creamy लगाओगे तो फिर वो oil और दिखेगा. But there's a trick to how to tweak your makeup, and that's why we teach. So any girls who want to learn, I have an academy in Bombay. You please feel welcome. And also there's a very dear student of mine called Nahi from Kolkata who I've trained, and she also has a salon, so you can even visit her, learn tips from her, and if you want to do a more professional course, feel free to come to Bombay. My Instagram is at Ojas Rajani. All right. And one last question. What few words I would like to know about Nahid Day, of course. So Nahid is here with us from Kolkata. Though I have trained a lot of makeup artists from Nahid, I think one good thing about Nahid is she picked up my style like this. अभी हाल ही में उन्होंने हमारी एक ब्राइड के लिए रिसेप्शन का मेकअप किया था कोलकाता में, और मुझे सबसे बड़ी अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने हमेशा मेरी गाइडलाइन, उन्होंने मुझे फोन किया कि व्हाट डू आई यूज, व्हाट डू आई डू, एंड शी स्टक टू दैट स्टाइल ऑफ मिनिमल सेक्सी मेकअप। एंड ब्राइड ने भी उनको उनके साथ बात की थी हमारे सामने कि आई वांट टू लुक वेरी नेचुरल, वेरी रियलिस्टिक, एंड शी स्टक टू दैट, ताकि मुझे भी फीडबैक मिला कि वो जो शी डिड अ गुड जॉब, शी वाज अ नाइस पर्सन। आई थिंक आपके काम के साथ साथ आपका पर्सनालिटी भी एकदम फ्रेंडली होना चाहिए, टू बी अप्रोचेबल। अगर आप ऐसे ही अपने आप को समझोगे तो आई थिंक ब्राइड बोलेंगे आप जैसे 100 मेकअप आर्टिस्ट हमें मिल जाएगी, राइट? बिकॉज जो इंसान आपको पैसा दे के बुला रहा है,
you have to show them a lot of enthusiasm, a lot of love and care, right? आज हम भी कहीं सैलून में बाल कटाने जाए, नेल कटाने, तो हम लोग कितने पागल, हाँ आईब्रो पतली मत करो, ये मत करो. So I feel when we give so much of, you know, pressure to people, if somebody is giving us pressure, we should always, okay darling. I think मेरी मम्मी ने हमेशा मुझे ये शब्द सिखाया है, okay darling, and be very pleasing. I think the best, काम से ज्यादा आई थिंक हर पर्सनालिटी इज वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, और उनका नेचर ऐसा रहा कि हमारी अकेडमी इतने स्टूडेंट्स आते, बट कभी भी किसी के साथ अनबन नहीं हुई है, बिकॉज नॉर्मली जब 10-15 लड़कियां इकट्ठा होती है, देयर इज ऑलवेज फायरवर्क्स, बट टचवुड इट्स ऑलवेज बीन वेरी प्लेजेंट एट आवर अकेडमी. सो आई थिंक शी इज द मोस्ट lovely personality, I think heart of gold, which is very important.